कोरोना के खिलाफ पीएम ने राज्यों को दिया 4T मंत्र, कहा जहां ज्यादा केस वहां उतना ज्यादा फोकस। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान, बोले भारत में अगले 100 से 125 दिन क्रिटिकल, कोविड-19 की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही दुनिया। यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों की जान सर्वोपरि, कांवड़ यात्रा पर करें पुनर्विचार। जमानत के बावजूद कैदियों की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा जल्द बनेगी जेल अधिकारियों तक आदेश तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कंधार में रिपोर्टिंग करते हुए फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की मौत, बॉलीवुड सितारों ने जताया शोक। आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में होंगे भारत और पाकिस्तान, आईसीसी ने किया ग्रुपों का ऐलान। और साइबेरिया में रूसी विमान लापता, कम से कम 17 सवारियां मौजूद। दुनिया भर में फैली वैश्विक महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने भारत में भी लोगों की हालत खराब कर दी है। उच्च स्तर पर फैली बेरोजगारी से ऐसा देश जहां सोने के सबसे अधिक धारक रहते हैं, वहां लोग अब उसी सोने को बेच अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत सराफे का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन महामारी से पड़ी मार ने उन्हें अपना सोना बेच दैनिक जरूरतों को पूरा करने की कगार पर ला खड़ा किया है। लंदन स्थित मेटल्स फोकस लिमिटेड के सलाहकार चिराग शेठ के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने ज्यादा आर्थिक तनाव पैदा किया है, जहां लोग आभूषण बेचने को मजबूर हैं, जबकि 2020 में पहले लॉकडाउन के दौरान लोगों ने सोने पर लोन लेने का विकल्प चुना था। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर की स्थिति में पिघले हुए सोने समेत गोल्ड स्क्रैप की सप्लाई 215 टन को पार कर 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। ये बात का संकेत है कि मार्केट में सोना घटेगा। शेठ ने इस बात से भी आगाह किया कि तीसरी लहर की स्थिति में अगस्त और सितंबर में सोने की बिक्री में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। देश में लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है कि करीब 20 करोड़ लोग दिन भर में 372 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। ऐसे में घर का किराया और बच्चों के स्कूल आदि की फीस भरने के लिए सोना बेचना लोगों के लिए आसान विकल्प बन गया है। बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक भारत के सबसे बड़े गोल्ड लोन प्रदाताओं में से एक मणप्पुरम फाइनेंस ने मार्च से 3 महीनों में $54 मिलियन के सोने की नीलामी की। ये वो सोना था जो लोगों ने उनके पास गिरवी रख लोन लिया था, हालांकि वो इसे चुकाने में नाकाम रहे। कोच्चि स्थित रिफाइनर CGR मेटलॉयज के मुताबिक दक्षिण भारत में लगभग 25% अधिक पुराना सोना ज्वेलर्स को बेचा गया है। हालांकि सिर्फ लॉकडाउन के कारण ही देश में ऐसे हालात पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले 2 सालों में भारत में आर्थिक मंदी के कारण गोल्ड बेचने का सिलसिला देखा जा रहा है। वहीं महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने लोगों की कमाने की शक्ति को कमजोर कर दिया है, जिससे अब गोल्ड धारकों के सोना बेचने में तेजी देखी जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2020 में सोने की बिक्री 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में संस्था के हवाले से लिखा गया कि जून 2020 के दौरान 3 महीनों में भारत में सोने की मांग 74% तक गिर गई। 2020 में भारत में सोने की मांग 2019 के मुकाबले 124 मीट्रिक टन तक कम हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास कम तीव्रता वाले विस्फोट से संबंधित एक मामले में कथित साजिश के आरोप में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था। ये सभी छात्र कारगिल के थे, जिन्हें गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला और वे सभी छात्र पहले ही से दोष मुक्त थे। मामले में नजीर हुसैन, जुल्फिकार अली, एजाज हुसैन और मुजम्मिल हुसैन को जमानत देते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डॉक्टर पंकज शर्मा ने कहा कि जांच अधिकारी ने ऐसा कुछ भी आरोपित नहीं किया है जो ये बताता हो कि वे किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े थे या समाज के लिए खतरा बने हैं। उम्र, पूर्ववृत्त और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी आरोपी व्यक्तिगत समाज से जुड़े छात्र हैं और इनके निवास की एक निश्चित जगह है,
इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि जांच अधिकारी के पास कस्टडी के लिए प्रासंगिक सबूत हैं, सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि एनआईए इस विस्फोट मामले की जांच कर रही थी। स्पेशल सेल ने आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। स्पेशल सेल ने 23 जून को 4 युवकों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने कथित सीसीटीवी कैमरे में कैद 2 व्यक्तियों की पहचान के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। दावा था कि सीसीटीवी में कैद युवक इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोटक सामग्री लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने तब कहा था कि स्पेशल सेल ने एक केंद्रीय एजेंसी और स्थानीय पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान के दौरान कारगिल से छात्रों को गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली लाया गया। जमानत के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि एक आरोपी अपने ट्विटर अकाउंट पर इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता था और उसको ट्विटर पर एक अन्य आरोपी फॉलो किया करता था। आदेश में कहा गया है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि कोई भी आरोपी भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें पोस्ट कर रहा था। यह देखते हुए कि आईओ ने पहले ही आरोपियों से सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद कर लिए हैं, अदालत ने कहा कि सभी आरोपी पूर्ववृत्त दोषमुक्त हैं और वे छात्र हैं। अदालत ने आदेश में कहा, आईओ की रिपोर्ट के अनुसार नजीर IRGC यानी कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का समर्थक है, लेकिन वो आतंकवादी संगठन नहीं है। जाहिर है आरोपियों ने अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सरेंडर करके जांच में सहयोग किया। आईओ के पास सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और इसके विश्लेषण में लंबा समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। The India of Narendra Modi today is not the India I fell in love with. And his government's failure to uphold the freedoms so pivotal to a democracy's survival, freedom of expression, freedom of the press, and of course, freedom of religion, are the reason why. Given the topic at hand today, I'll focus on freedom of religion. The United States Commission on International Religious Freedom released a chilling report this year describing what it called, quote, Hindu nationalist policies resulting in systemic, ongoing, and egregious violations of religious freedom. The report describes attacks on religious freedom in India that occurred throughout 2020, from disinformation about the COVID-19 pandemic that targeted religious minorities, to attempts to ban interfaith marriages, to riots in Delhi, where more than 50 people died and 200 were injured, most of them Muslims. The report called this, and I'm quoting again, the worst Hindu-Muslim mob violence in more than 3 decades, in which mobs supportive of Hindu nationalism, quoting again, operated with impunity, using brutal force to single out Muslims, attack mosques, and destroy homes and businesses in majority Muslim neighborhoods. All of these examples are deeply upsetting, but perhaps what is most alarming about this report to me is the fact that these attacks are not new. They're part of a pattern we've seen becoming increasingly clear and prevalent under Prime Minister Modi. Over the last several years, I've connected with many Indian Americans in my district and learned about the injustices. Throughout my candidacy and certainly throughout my first 6 months in office, I've been very clear about human rights and what's happening in marginalized communities here in America, but in Palestine, China, Yemen, India, across the globe. We must speak out about these horrifying events. Unfortunately, in recent years, India is facing the same right-wing fascism that attempted to destroy our own democracy not that long ago. I believe that this is happening frequently and more frequently than we can imagine throughout our nation and other nations. I believe this ultra-nationalism and this very supremacist ideology are the greatest threats to our national security. In the last 7 years, hundreds of Muslims just walking down the street have been attacked by vigilante mobs. They've been lynched. It is a travesty of justice, and I'm horrified by it. Religious minorities, social and political activists, lawyers, journalists, and even students are attacked all the time. The worst brunt of the government's persecution is being faced by India's
200 million Muslims who now face statelessness thanks to this horrible National Register for Citizens, or the NRC as it's called. I can't get over it. I didn't think I'd see this in my lifetime, but we are. Across India, but especially in the northern state of Uttar Pradesh, Muslims have been subjected to killings alarming even the United Nations officials who wrote to the Uttar Pradesh government about these killings. Amnesty International has documented the violence against Muslims, whether from the police in response to the protests against the citizenship law, or in the Indian capital of New Delhi last year by rioting mobs who were allegedly part of Hindu nationalists. Thousands of Muslims who protested the citizenship law, as well as those who lost family members and property in the violence against them, continue to be imprisoned. Our own report from the United States Department, released by Secretary Blinken in 2020, speaks at length about the persecution of India's Muslims and Christians. The report said, and I quote, "There were reports of religiously motivated killings, assaults, riots, discrimination, vandalism, and actions restricting the right of individuals to practice and speak about their religious beliefs." The report further states that Muslim academics, human rights activists, former police officers, and journalists allege anti-Muslim bias in the investigation in relation to Delhi. India is the world's second most populated country with over 1.3 billion people. Religious persecution, violation of human rights, curbs on civil and political rights are going to make India less secure, not more, I assure you. India's equity and standing in the eyes of the world are severely damaged. Already, Freedom House has downgraded its rating for India's democracy from being free to partly free. That's heartbreaking. Persecution of entire sections of society, especially when backed by governments, is a recipe for a future filled with disaster. We must do better. We must pressure both our adversaries and our allies to support human rights around the world for the sake of a cohesive existence and sustainable peace across the globe. Hate anywhere is unacceptable. Religious freedom is a core principle upon which the United States was founded, a key tenet of the Universal Declaration of Human Rights. And today, protection for religious freedom now form the cornerstone of democracies worldwide. Unfortunately, we are seeing increasing numbers of governments restrict rather than protect religious freedom in their laws and actions around the entire globe. For many minority groups around the world, religious persecution is an urgent concern, not an artifact of history. Laws that criminalize the rejection, abandonment, or speech critical of certain beliefs are harmful restraints on religious freedom and human rights. India has long had an admirable commitment to pluralism. It is the world's largest democracy, whose bonds with the American people continue to grow. But the United States is right to speak up and speak out when a fellow democracy and strategic partner fails to protect the rights of all their people. That is why I remain seriously concerned about the Indian government's commitment to protecting the rights of minorities, including the 200 million Muslims in India, the government's targeting of social and political activities, and crackdown on free speech, and their religiously motivated discrimination against minorities cannot be viewed in isolation, as escalating nationalism threatens to undermine India's long-standing oath to democratic values.